Hello, good morning, Lalita. Morning, sir. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm also good, sir. Yes. Weather is also good, isn't Yes, it? sir. Today also it is raining. Yeah, it's raining. It's still raining, I think. Yes, sir. Yes. Right now Raining also it outside. is raining. Yeah, Yeah. yeah. Actually, sir, it is a mix. मैंने कल पढ़ा कि मैंने भी पढ़ा. this is because of the cyclone also. This is because of the pre-monsoon also. Pre-monsoon also, right, right. ये मानसून तो मतलब ये टाइम है भी, बट वही Exactly. एक चीज को ट्रिगर मिल गया वो साइक्लोन की वजह से इट इज Ex रेनिंग सो मच. right, right. It's a pre-monsoon, right. It's a immature monsoon. It's a monsoon. अभी भी actually दिल्ली में तो जून के बाद आता है, राइट. 15 जून है दिल्ली में आने का, लेकिन आता लेट है. Yeah, but वही है ना, the months are changing, मतलब उस Yeah. हिसाब से the months are Yeah. changing. So weather is really good. Even I took bath with, shivering. It's too cold, as if you compare the, weather. इतना temperature high है, उसके उस level पे तो बहुत cold है. नहीं सच में सर, मैंने भी पंखा या फिर एसी कुछ नहीं चलाया हुआ. कुछ नहीं चलाने की जरूरत है. अगर आप चला रहे, मतलब चलाएंगे तो आपको ये ना रजाई ओढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी. Right? Yes, sir. Yeah, yeah. So today we are going to start a new chapter that is called globalization, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so anything you know about globalization? Yes, sir. What? बट एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था सर उससे हाँ, पहले. पूछ ली. कल वो जो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे थे, Electoral system, not reforms. ओ Electoral सॉरी system. सिस्टम. यस Right, सॉरी right, यस. right. तो उसमें से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम कि मतलब ये वाला Direct. समझाओ. No, no, no. It will directly come. Question will directly come. No. डायरेक्टली PSIR, it will come directly. मतलब उसमें से क्वेश्चन कैन कम डायरेक्टली कि मतलब Direct. फर्स्ट पास द पोस्ट और ये क्या हाँ है हाँ हाँ हाँ. SMTP एडवांटेज. ऐसे. हाँ, लिख देंगे सिंपल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम क्या है, या डिस्कस सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम. And where it is, which country it is, exercising. But what are the countries which is exercising this electoral system? ये भी कोई दो पार्ट में पूछ सकता है या एक ही पार्ट में पूछ सकता है. आपको लिखना वही है, SMTP है क्या, कहाँ कहाँ पे ये ऑप्ट किया जाता है, उसके एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेजेस. ठीक है. ओके सर. ठीक है. सर ओके. नाउ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, या सो बेसिकली द फोकस इज कि हम एक पूरी वर्ल्ड को एक विलेज की तरह ट्रीट करें, जहां पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना या फिर ये अदर इकोनॉमिक थिंग्स पॉसिबल हो सके. That is what is globalization. To make a world a smaller village where people are connected to each other. Okay. In terms of trade, in terms of. Is it new or is it old? Is it new phenomena or is it old phenomena? No, it is not exactly new. It is, I think, it has its origin from the medieval history only. But वही है, उस समय people didn't know that this is globalization. ये term तो बाद में दिया. But the people 1970, 1960s 70s के बीच में ये टर्म उभर के आया है. Yeah, very बाद में, लेकिन medieval में ही people used to trade और वो लोग जाया करते थे और trade, migration. Yeah, migration, trade. Right. But yeah, it has grown मतलब over the period of time. So migration, trade, flux of people going there, it was every time. ऐसा नहीं कि medieval में भी, ancient time में भी था,
कि चाइनीज लोग आते थे इंडिया, या इंडिया के लोग ग्रीस जाते थे, ग्रीस के लोग इंडिया आते थे, ईरान के लोग इंडिया जाते थे, राइट? ये सर, तभी तो वो फॉरेनर ट्रैवलर्स ने इंडियन हिस्ट्रीज के बारे में इतना लिखा है, लिखा मतलब। है, लिखा है, लिखा है. But I don't think that you called globalization, Yeah, that's sort of because my. that sort of of course internal or external migration, right? That happened that time. Ancient period में भी हुआ, medieval period में भी हुआ, and modern period में भी हुआ. Actually 16th century के बाद हम देखते हैं कि lots of foreigners came, like Portuguese, But we can say that was a base, at least. French. It all But started. is it that उस सेंचुरी में इंडिया के लोग भी उतना ही नंबर में जाते थे? नहीं जाते, उतना नंबर में नहीं जाते थे, बट यार कुछ एक दो जाते थे, Anyway, क्योंकि so what kind of phone you are using? I'm so using sorry if I'm Android. asking. Sorry, which No. phone? No, Android, Xiaomi, And which MI. क्या कंपनी का नाम बताइए, कहाँ का है? Xiaomi. कहाँ का है वो? It's not Indian, I think. No, I think this is Chinese. Chinese, right? Let me tell you what phone I'm using. I'm using MI, right? MI is Xiaomi, sir. MI, I'm This is also Xiaomi. using. It's a Yeah, Xiaomi. but actually, It's a Xiaomi or Xiaomi? no sir, Xiaomi, XIOMI. तो लास्ट का जो MI है, MI बोल देते हैं, but it is exactly Xiaomi, पूरा नाम मतलब. अच्छा, मैंने जियोमी सुना है लोगों से, तो हम भी जियोमी, मैं भी जियोमी बोलता हूँ, right? अच्छा, no sir, no, it's Xiaomi. Okay, Xiaomi. So that's I'm using MI. That's right. You are also using MI. That is Chinese phone. Yes, sir. Right? Okay. Yes. Let me tell you, I'm using fridge. That is Samsung. Okay. Yeah, I'm also using Samsung. Samsung. I'm using fridge. That is Samsung. Okay. I'm using washing machine in my house. That is LG. Right. And I'm using AC. That's a Hitachi. Right. It's a Hitachi. Right. And let me tell you, I'm using my shoe, that is Adidas. It's single D, no? ADS. Yeah. Right. So, and I'm using tab, that's also Samsung, and I hear Gajal every day. Every day I hear Pakistani Gajal. And I watch a BBC and Al Jazeera News, right? And that BBC is broadcast from London. Yes. And this Al Jazeera News is broadcast from Qatar. Am I right? Yes, sir. Okay. Let me tell you other thing. Yeah, I'm using the laptop, the desktop that I'm using, teaching you. It's a Dell. It's American product. Yes. Right. And what should I tell you? What should I do? Other thing? Yeah. If I go to outside, just just घर से बाहर निकल जाइए, तो you can get Thai food, right? Yes. And if you go little far away, you'll go for a mall, right? And in the mall, you have been mall. You must have been too. Yeah. Yeah. You will get every thing if you want, कहीं का भी कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा, right? And that everything you can get there from any part of the world, right? For example, the brand you want, any kind of brand,
right? Any, right? What do I, I want to say that मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ नो, यहीं बैठे बैठे जो है आपको अमेरिका भी मिल गया, चाइना भी मिल गया। yes so बैठे बैठे आप भी सब कुछ ऐसे ही करते होंगे जैसे मेरे साथ हो रहा है, राइट? आपका भी जो होगा, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन होगा, कुछ वो LG सैमसंग या कुछ गोदरेज का होगा, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि हमें एक ही जगह पर बैठकर, हमें चाहे वो चाइना की चीज है, चाहे वो अमेरिका की चीज है, वो हमें यहाँ पर मिल रही है। जैसे पहले होता था कि पहले कोई लोग जाते थे, कोई कश्मीर जा रहा है, वहां से कश्मीर का शॉल लाना, ऐसा लाना, क्योंकि वो वहां नहीं मिलता था। तो आई रिमेम्बर माई दादा यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू कॉल हिम बाबा, तो माई बाबा यूज्ड टू से, हम लोग बाबा कहते थे, हम लोग भी दादाजी को बाबा ही कहते। ओके, तो आई रिमेम्बर दिस कि ही यूज्ड टू से कि अच्छा बताओ वहां से व्हाट डू यू वांट, मतलब जहां पे भी ही यूज्ड टू गो, एंड देन दिस स्टेटमेंट एंड देन दिस स्टेटमेंट कन्वर्टेड टू दिस कि अब क्या, अब तो सब सेम होता है, यहाँ पे मिल जाएगा, वहां से कुछ नहीं। और क्या, दिस इज ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इन सिंपल टर्म्स। Yeah, if you go to Canal Place, you will get everything. Yeah. Right, Canal Place में आपको दुनिया की सारी चीजें मिलती है। Yes, sir. दुनिया की कोई भी फूड है, right? Even the book I read, the many books I read from American publications, right? आपके पास तो सर पूरा लाइब्रेरी होगा ना बुक्स का? कितना मेरे पास है, ज्यादा नहीं है, कुछ बुक्स तो है, 1,000 के आसपास, 2,000 के आसपास का है। सर ये तो मतलब अभी फिलहाल तो मेरे लिए ज्यादा ही है। बट आई ऑल्सो लाइक दिस टारगेट। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऐसा मतलब वी शुड हैव दिस गोल इन लाइफ कि हम इतनी बुक्स तो पढ़ेंगे। राइट, सो आई एम ऑल्सो ऑन इट, बट ऐसा कोई नंबर खास अभी है नहीं मेरा। मैंने अप्रोक्सीमेटली कहा है, I buy book and I buy book for my son, for my niece. Book मेरी mother, she's not literate. She never went to school, but she reads. Oh, well, that's nice, sir. Right. So हम बुक लाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ के फिर रख दिया। हाँ। So I also love reading books. Yeah, it's very good. It's very good. We must read 2 novels in a year, at least 2 novels in a year. I'm not telling you एक दिन में novel खत्म, no. 2 novels, whether you read Hindi novels or any folk novels, for example, you take the Tagore novels, Tagore ने लिखा है, जो घोड़ा है या घोड़े बाहरे है, कुछ भी आप जरूर पढ़िए। Anyway, so books I read, which is from the American publications, right? So see, at one place you enjoy, as you rightly pointed out, the world, right? Yes, sir. You enjoy the world. And how it is possible? Because, the uninterrupted flow, right? Or uninterrupted flow of what? Goods, right? These all are goods, right? Services, right? Trade, ideas, right? Even people. कर लो दुनिया मुट्ठी में. कर लो दुनिया मुट्ठी में. Right? So if you see the entire and it's not about India. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. हम लोग को JNU में 26 जनवरी को हर साल एक इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता था. और 26 जनवरी को एक्चुअली मेस में जो लोग नेशनल हॉलीडे ना 26 जनवरी. यस सर. तो जो मेस के लोग थे उनको छुट्टी मिल जाती थी और हम लोग क्या करते थे, शाम को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में जा रहे थे और दुनिया की सारी फूड मिल जाते थे वहां पर. राइट, मतलब अफ्रीका के कोई फूड चाहिए, यूएस का कोई फूड चाहिए, चाइना का फूड. चाइना तो फूड तो हमेशा हर गली हर नुक्कड़ में मिलता है इंडिया में. राइट, फॉर एग्जांपल चाउमीन और मोमोज, राइट.
Yes. Momo, I think Momo has its origin in Tibet. I've heard somewhere. हाँ हाँ सर, ये मतलब चाइना का नहीं है, दिस इज रॉन्ग नोशन। Yeah. वो चाइना का नहीं है, यस। It has origin in Tibet. वो शॉप वालों को भी नहीं पता होता, तो वो ऊपर चाइनीज फूड करके लगाते हैं और उसके नीचे Right. लिस्ट में मोमोज लगाते हैं। Right. Anyway, so see, here we use drink Coca-Cola. Coca-Cola मतलब ठंडा, right? और हम अभी भी सेविंग बनाए हैं वो that Gillette, right? And if you थोड़ी देर में अगर मन हुआ तो पिज्जा मंगा लिया, right? So पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, right? कुछ अगर आपने कार चली तो आपने अगर कोई कार तो वोक्सवैगन खरीद लिया या कुछ और खरीद लिया, मान लीजिए होंडा अमेज कार, राइट? होंडा का खरीद लिया, हुंडई का खरीद लिया. How living in India and you can access the all goods of the world, all goods, services, ideas, right? फेसबुक पे आप दुनिया के किसी जगह पे चैट कर सकते हैं, राइट? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। राइट? हाँ, तो दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं, अमेजन ऑनलाइन, सो अमेजन क्या सर्विस प्रोवाइड करता है पता है आपको? देयर इज amazon.com and there is amazon.in. so जो amazon.in है that is functioning in India, but that is amazon.com that is functioning in अमेरिका, राइट? आप amazon.in से कुछ मांगिए, अगर आपने डिमांड किया, अगर उसके पास नहीं है 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देगा कि दिस इज अवेलेबल, राइट? वो मंगाता है और फिर आपको सर्विस करने के लिए वो तैयार रहता है, राइट? सो वही मैंने लिखा है अपने लैंग्वेज में कि whenever you are in the world at this moment, wherever you are in this world at this moment, look at the product that populate your immediate surroundings, right? From where did they all come? I'm using that's my mobile मैंने बात किया है, right? Made in China, Samsung tab, fridge from South Korea, Dell laptop from America. I watch BBC News channel broadcast from UK and Al Jazeera broadcast from Qatar. I can connect via Twitter and Facebook from any part of the world, right? Yes, sir. I read Greek literature, right? And I hear Pakistani ghazal. You may hear any music if you want, right? Put a YouTube, and YouTube is a global village. You can say YouTube or Google. What is Google? Google is an absolute example of the globalization. What is COVID? Why COVID-19 had फैल गया इतना जल्दी? Globalization. Because of globalization, we are interconnected. The entire world is interconnected, right? And if this interconnection is so high, so intensified, that this ये जो बीमारी है, it has become a pandemic, right? It has become a global, everywhere. Australia, India, America, right? Latin America, Europe, Africa, everywhere you can find this virus, right? Yes, sir. Right. So this virus, that's corona, right? Yes. कोई रोड पर ना जाए, यही ना? Good. Remember, कोई रोड पर ना जाए. Do you remember the Prime Minister's first speech that he described corona, कोई रोड पर ना जाए. Yes. पोस्टर भी हाथ में एक बच्चे ने बनाया था, उन्होंने वो हाथ में लिया हुआ था. Right. So even if I live in a small, quiet, and relatively insular community, global forces have shaped what I wear, what I consume, how I work, and how I entertain myself. How these global forces has shaped my choices, even your choices, right?
this class is happening due to this global forces. What is internet? Right? So आप कहीं पे हैं और पता है आपके साथ साथ कहीं और उड़ीसा के लोग हैं, कहीं कहीं बड़े कहीं कहीं के भी लोग क्लास ले सकते हैं, राइट? Yes. So wherever you live, right? This is your choice. But किससे बात करना है, कैसे बात करना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या काम करना है, राइट? क्या पहनना है, it is, if you think that it is your choice, it is not your choice at all. It a choice that is shaped by the global forces. For example, ट्विटर पे चले जाते हैं, राइट? या फेसबुक पे चले जाते हैं, या आप इंटरनेट से तुरंत किसी से बात कर लेते हैं, राइट? Yes. The choices is being constructed by these global forces, right? Yes, sir. Right. So if you see that, you know, a starting point for you understanding globalization is the everyday observation. ये जो हर दिन का observation है, ये एक starting point है globalization को समझने का, right? Yes, sir. How this, you know, people, goods, money, idea moved across the, you know, geographical distances. किस तरह से ये जो लोग है या गुड्स है या मनी है या आइडिया है, किस तरह से मूव करता है. You know, IPL. Do you watch IPL? Indian Premier League, the cricket match? No. पापा you know, देखते पापा. पापा देखते हैं बस. You see the how IPL में, you know, हो रहा होता है इंडिया में, और जो डांस कर रही होती हैं वो यूरोपियंस होती है, राइट? राइट. और वहां पर आप दुनिया की कोई देश नहीं है जिसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ना हो, राइट? पेप्सी का, कोको कोला, हाँ, कहीं ट्यूब लाइट किसी और का, किसी और कंट्री का, गेंद किसी और कंट्री से, बैट किसी और कंट्री का, एम्पायर किसी और कंट्री का, राइट? प्लेयर किसी और कंट्री का, राइट? Yes. So this life experiences and the social relation has deterritorialized. What does it mean? Deterritorialized. The life experience. Yeah. बोलिए. तब ऐसा नहीं लगता अब कि there is some territory. Yeah. वहाँ पे जाना है. Right. जो कुछ पाने के लिए जैसे लगता है कि गजल पाना है, पाकिस्तानी गजल चाहिए, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जाना है आपको सुनने के लिए, राइट? अगर आपको अमेरिकन कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए डेल का कोई लैपटॉप चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं कि आपको अमेरिका जाना है. Have you heard of this one company that called Bose? Which? Bose. Yes. BOSCH. CH or E? Yeah, Bose. Bose, so, yeah, okay, speaker वाला. It's a highly qualified, you know, music instrument, you know, and music box. Yes, sir. That is manufactured in United States of America, right? So, you know, कुछ चीजें पाने के लिए या कुछ सोशल रिलेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अमेरिका जाना है, नो. घर में बैठे बैठे, you know, you can access that, right? Yes, sir. And how does it happen? Because of the economic expansion, technological advancement, and the political ambition of the particular country or every country, right? Yes, so globalize, then, you know, we can say that globalization means an erosion of, you know, state boundaries, an erosion of the importance of the state boundary. State boundary, it's okay, but the state boundary is not, you know, bar. It's a state boundary is not a restriction. कि आपको क्रॉस करके फिर वीजा लेना है, फिर जाना है अमेरिका, और फिर आपको डेल खरीद के लाना है, राइट? आप इंडिया में बैठे बैठे डेल का कुछ भी सामान हो मंगा सकते हैं, या सोनी का, यू नो, सोनी टेलीविजन हो, या सोनी का कैमरा हो, हाँ, या पैनासोनिक का हो, राइट? या कौन और एक दो और बोलिए, बहुत कैमरा लोग यूज करते हैं,
कैनन लोग कैनन यूज करते हैं, राइट? सो यू नो the importance of state boundary has decreased in international system, right? जबकि एक टाइम ऐसा था जब स्टेट बाउंड्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेट बाउंड्री को क्रॉस करके जाना है, राइट? और स्टेट बाउंड्री एक ब्रिज हुआ, एक वो हुआ करती थी, बैरियर्स, कि आपको स्टेट बाउंड्री क्रॉस करके कुछ जाइए तब वहां पर मिलेगा, राइट? नाउ दिस स्टेट बाउंड्री हैज बिकम अ ब्रिज, कि आप क्रॉस करके जा सकते, मतलब मंगा सकते हैं, राइट? ब्रिज हो गया. एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, free flow of services, free flow of people, free flow of ideas, culture, and that is around the world, right? There is no restriction. State boundary has not become a restriction, a barrier to access any good from any part of the world, right? Yes, sir. Okay. So can we say that that this uninterrupted flow of goods, ideas, communication, people were existing in the history of humankind? The answer would be no. The simple answer would be no. Yes, there was a flow of ideas, flow of communication. People yahan se wahan jate the, but uninterrupted flow of goods. कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है. पहले तो ऐसा नहीं था कि लोग ईरान के लोग इंडिया नहीं आते थे, या इंडिया के लोग अमेरिका नहीं जाते थे, राइट? वो भी अमेरिका जाना मुझे बाद में शुरू किया. अमेरिका का खोज ही हुआ है 1492 में ना, और 1592, राइट? 1492, राइट? क्या हो गया, मैंने क्या क्लिक कर दिया? प्रिंट. अच्छा, प्रिंट क्लिक कर दिया, सॉरी, राइट? सो what made this the very intensified? Actually, the first things if you recognize, then industrial revolution and discovery of science and technology in 16th and 17th century influenced migration of people from one continent to other continent, and flow of goods, ideas, economy, and people started migrating from this part of world to that part of world, right? That is true. 16th century में आप देखिए, 16th 17th century में जो स्पेशली यूरोप के लोग थे, इन्होंने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया, पूरी दुनिया की खोज की, राइट? और पूरी दुनिया के साथ इन्होंने ट्रेड किया, इंडिया के साथ भी ट्रेड किया. बट इन द लास्ट 40-50 years this flow of goods, ideas, communication, culture, music have intensified, and the entire world have interconnected due to invention of new technology of transportation and communication like internet, right? And it has transformed the world. इसने दुनिया बदल के रख दी, right? Am I making sense? Yes, sir. Okay. So अभी लिखना नहीं है, लिखना होगा मैं बता दूंगा, right? Okay. अभी लिखना है, अभी जस्ट आपको जानना है, अभी लिखना नहीं है, आपको समझना है कि है क्या ये, right? Then from age of discovery यही था 16th-17th century. इसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसी टाइम पे आप डिस्कवरी देखे, रेलवे से लेकर के स्टीम इंजन से लेकर के सारे जो भी मेजर इन्वेंशन थे उस टाइम पे बहुत हुए. ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा, हुआ आज भी हो रहा है, लेकिन 16th century के और 17th century के इन्वेंशन ने प्रमोट किया कि लोग बाहर जाएं, राइट? कैंपास का इन्वेंशन हुआ, बड़े बड़े जहाज का इन्वेंशन हुए, वो आना जाना आसान हो गया, राइट? तो ये जो टाइम था, एक इसको बोलते थे एज ऑफ डिस्कवरी टू द न्यू मिलेनियम, आज की जो दुनिया है, राइट?
this process of flow of goods, ideas, communication, culture, music has transformed the relation between relation and connection between the people and community. And this relation and connection between people and community and their ideas, their their culture, even the culture, you can see the everyday culture, right? Everyday food you eat, everyday the things you use, right? That is shaped by the entire process. The term is captured by the word globalization, right? Yes, sir. Am I making sense? Yes. Right. So what is globalization? So globalization, we can say basically territorialize. कोई टेरिटरी जो है वो नहीं बची है. आप मतलब चाहे कहीं पर भी हैं, वहां पर किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड की गुड्स, रिसोर्सेज, सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. और if we say कि ऐसा ये this existed in the history of humankind, तो वो ऐसा नहीं है. हाँ, मतलब like kings used to say they used to import things as well, like precious stones वगैरह they used to get. Right, exactly. Yeah, but वो इतना नहीं होता था, इतने लेवल पे नहीं होता था. It all started with the emergence of industrial revolution. और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ, रेलवेज आ गए, अदर थिंग्स एज वेल, बहुत सारी मशीन्स आ गई. सो उसी के साथ ये इतना जो है वो स्टार्ट हुआ कि हम कहीं पे भी बैठ किसी भी कंट्री के गुड्स, कल्चर और आइडियाज, व्यूज, रिसोर्सेज, सर्विसेज जो हैं वो इधर से उधर मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट इज the globalization, basically creating a world into a global village where you can avail things without actually physically going there. Right, like, exactly. जैसे पहले जाना होता था, like for example ancient time में kings used to send their other people like of the village, वो भेजते थे, आओ वहां से precious stone ले आओ, अफगानिस्तान से ये ले आओ. So this thing has now we can say abolished because of this. और अब तो हम यहाँ पे बैठ के we can order online, we can buy. Right. So that's what this globalization is. Right. So that in the last 50 years, 40-50 years, this flow of goods, ideas, communication, culture, music has intensified. Right. The entire world has been interconnected. And due to this new technology, especially internet, right? Internet is a very important invention. और जब globalization start हुआ, there was not that usage of internet. तब तो फिर भी हमको at least बाहर market तक जाना होता था. Now with this help of internet, अब तो हम घर पर मंगा सकते हैं, मतलब without even stepping out. Exactly. And every day you use, your everyday life is shaped by the term, the term globalization, right? Because every day you use different, product, and that different product is not made in India. The different product is coming from the different part of the world. Yes, sir. Right. And if we think कि हमारी choices है, that are our choices, that is wrong, because जो हमारी choices नहीं है, that is formed or shaped because of this only. कि कौन सा product है, ये है, तभी तो मतलब when we know कि we can avail, we can listen ghazal sitting here, तभी तो हमारी choice है कि हम ghazal सुने. Otherwise हमें पाकिस्तान जाना होता, वहां से CD खरीदने लेकर आना होता, खरीद कर, तो हम शायद we would have avoided this listening to ghazal. नहीं यार, even market जाना होता, मार्केट में भी सीडी मिल जाती, राइट? तो भी मतलब क्या है कि जो कंट्री का जो एक बॉर्डर है, इट इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. व्हाट इज दिस? बॉर्डरलेस वर्ल्ड. इट इज अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. वी कैन से इट? यस सर. राइट. सो the life has become borderless. No, and
we can say that it is a product of modernity. Yeah. Can we say it? Yeah, because the Yes, sir. modernity, and because modernity brought many things like industrial revolution, science, technology, right? New innovations, new idea, right? Like idea Yes. of, idea of Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, that has reached due to modernity, isn't it? Right? Yes, sir. The free flow of ideas. So this all, has social relations, and connection between the world and between the people and community, has become a borderless, and that has been captured by the word globalization, right? Yes, sir. Okay, the basic thing. Now come to here, see that the basic questions that we are going to discuss. This is, अभी हमने शुरू किया है ग्लोबलाइजेशन, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, हो सकता है तो एक दो दिन और लगे, राइट? बिकॉज कहीं पे भी आपको ग्लोबलाइजेशन पूछ देगा कि ओके ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है, तो यू मस्ट नो द ग्लोबलाइजेशन क्या है, द डेवलप वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन क्या है, अलग अलग व्यू क्या है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, राइट? So we are going to start going to know about, yeah. सर एक सेकंड, इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक्चुअली आई वाज मेकिंग प्लानर अपना PSIR का, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कितना अमूमन है कि हम मतलब उस डेट तक विल कंप्लीट द थिंग्स, मतलब जो बचा है हमारा, because accordingly I am planning my all these मतलब रिवीजन का शेड्यूल. First week of June, first week of June we will be able to, or maybe second week, maybe extended, depends on कि कितना हम लोगों ने किया है. नहीं, और वो जो सर आपका जो नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो वो कब होगा? It's not I'm not still no, I don't know कब होगा, but होगा. कितना लोगों ने एडमिशन लिया है, क्या उनका क्या प्रोग्राम है, कब से शुरू करना है, वो सारा लोग वो करते हैं, हमें पढ़ाने के लिए दिया जाता है. अच्छा, इज इट पॉसिबल कि वो जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक आप रिवीजन क्लासेस भी ले सके? You have to talk to the, और वो क्या बोलते हैं उनको, मैम को, सरिता मैम को, ये बोलते. सर आप आज उनका नंबर मेल कर देंगे? मैं I'll do that. You talk to him. Just अभी बात मत करना, जब क्लास खत्म होने वाला होगा ना तब बात करना कि हाँ मुझे तो थोड़ा, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मुझे और थोड़ा पढ़ना है, तो क्या करें मैम. Sure sir. She will tell you. हाँ, then we just you आपने ऑफर करना कि सर मैम ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और क्लासेस सर से ले लूँ. Sure sir. If she agree, then I don't have any problem, right? Because I'm an employee over there, right? Yes. So I have to follow their guidance. Fine. Okay. So we will discuss what is globalization, how should it be conceptualized, कैसे conceptualize करना है, globalization है क्या, and how distinctive is contemporary globalization, जिसको हम कह रहे हैं कि ये 40 से 50 साल में आया है, ये जो 40 से 50 साल का जो है पहले से कैसे अंतर है, right? How distinctive is the contemporary globalization in relation to the previous era, and what is the impact of globalization on individual political communities, right? Every political community, you see, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. हमारे यहाँ जब मैरिज होता था, तो मैरिज में धोती और कुर्ता पहनते थे. अभी मैं बंगाली का जो पहले मैरिज होता था वो धोती और कुर्ता पहनते थे, राइट? यस सर. वो तो शायद अभी भी अब नहीं पहनते हैं. अब शेरवानी और जो धोती होता है दैट इज वेरी अपडेटेड, राइट? यस, शेरवानी पहनते हैं, राइट? Punjabi culture is full of globalization. It's not limited to Punjabi culture, but Punjabi culture is really heightened, increased with globalization. You can see the जो Punjabi का जो life है, it's full of globalization. कैसे सर? उनका एक लोग होगा कनाडा में,
एक लोग है अमेरिका में, आई मीन गुजराती, राइट, खुद यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, राइट, और उनका जो मैरिज होगा, स्पेशली जो मैरिज होता है, the entire thing has transformed. It's not only marriage, the entire life, everyday life में मैं बता रहा हूँ, everyday life, जैसे आज मैंने गया तो ब्रश किया तो I used Colgate. Colgate is not an Indian product, right? Yeah. Right. So अभी यूज करती होंगी कोई Colgate, क्लोजअप, कुछ भी तो, right? Yes. So तब से लेके, और सोचिए कि रात में सोते वक्त जो आप यूज करते हैं ऑल आउट, हम यूज करते हैं ऑल आउट। Yes. मैंने एग्जांपल दिया, उठने के बाद और सोते से पहले तक हम ग्लोबल मतलब बाहर के प्रोडक्ट यूज करते रहते होते हैं, राइट। बाहर गया, चाउमीन खाया, थाई फूड खाया या कुछ और खाया, जो मर्जी, राइट। आप मैं बोला कि हर दिन हम कितना यूज करते हैं और कितना इंडियन सा लगता है कि हमारा है ये, राइट। बट क्योंकि हमारा नहीं है, we are really, you know, become very much intermingled, right? And we also difference भी नहीं पता नहीं चलता, right? And we will also talk about what is the impact of globalization on the state sovereignty and autonomy, right? So on the sovereignty and autonomy of the modern nation state. अभी मैंने कहा कि जो बाउंड्री है वो बैरियर था, ये बाउंड्री खत्म हो गई है, राइट। जो स्टेट बाउंड्री था वो खत्म हो गई है। तो क्या मतलब कि ये कि जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो अब कोई डिक्लाइन कर गया है, दैट वी विल टॉक अबाउट। देन वी विल टॉक अबाउट द डज ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अ न्यू पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, yes, or a new pattern of winner and losers. Is it that a globalization good? Yes, sir. Is globalization good? It is good also. Yes, sir. Yes, that we will talk about. Ki, you know, does globalization create a new pattern of inequality, a new pattern of stratification, right? A new pattern of winner and losers in the market, because globalization is all about the market society, right? Yes, sir. It is all about unregulated capitalism. अभी बात करेंगे unregulated capitalism. अभी तो हम आपको आम भाषा में बता रहे थे कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अब हम एकेडमिक भाषा में बात करेंगे कि how the market society, unregulated capitalism, right? This is political science language. Any confusion? No? No, sir. Right, right. So, you know, the modern world, you know, has been shaped decisively by the development of the political community tied to particular piece of land and formed into nation state. जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्नली मान लीजिए कि 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो मॉडर्न वर्ल्ड था, राइट, it was developed by the political community and that was tied to the particular land. हम इंडिया में रहते थे, कोई जर्मनी में रहता था, कोई अमेरिका में रहता था, you know, and that was formed into a nation state, right? Yes, sir. So from the late 16th century onward, the political power become concentrated in state structure, right? And first in Europe, if you see the nation state, first Europe, then eventually the across world, right? The sovereignty, legitimacy, and democracy all came associated with the fixed border and territories. हम जब स्टेट की बात करते हैं तो हम स्टेट बात करते हैं कि स्टेट हैज अथॉरिटी to use violence, uninterrupted violence, you know, authority, state has authority over the monopoly of the violence under its own defined territory, right? Yes, sir. But against this backdrop, today question arises whether the state are still important. Question is very important.
whether state are still important, whether state borders are still important, whether state sovereignty is still important, right? As they once were to organize of human affair, or whether they are subject to erosion in the wake of globalization. क्या ये sovereignty state का वो खत्म हो रही है? क्या जो ये स्टेट सोवर्निटी थी, स्टेट का कमांड होता था, बॉर्डर से इधर क्या जाएगा आप बिना परमिशन के नहीं ला सकते थे। आप 90 से पहले की दुनिया, भारत को सोचिए क्या था यहाँ पर। आप इमेजिन नहीं कर सकते वहां पर इंडिया में कार क्या चलती थी पता है? कार, 2 कार हुआ करती थी। एक तो आपने मारुति का नाम सुना है? yes. मारुति का एक कार हुआ करता था एम्बेसडर, देखा है एम्बेसडर? बहुत ही मजबूत होता था, नहीं पता है? और जो दूसरी कार होती है ना, जितने ये जो आपको मारुति सुजुकी के या इधर उधर के कार, अगर ये एम्बेसडर में भिड़ जाए ना तो मारुति सुजुकी वाले डब्बा है वो पिचक जाए। मारुति उसको एम्बेसडर को कुछ ना हो, इतना उतना हट्टा और तगड़ा होता था। अभी भी ऐसा कुछ ऑफिसेस में, बट मारुति का डिस्टिंक्शन हो गया, उसको ना अब शोपीस में लगा देना चाहिए, नहीं म्यूजियम में। नहीं, मैंने मारुति एम्बेसडर में लास्ट टाइम कब चढ़ा था? 2016 यस 13-14 में एम्बेसडर में, राइट? क्योंकि हम कभी फील्ड वर्क करते थे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए, और जो हमारा जो वो होता था कैब होता था वो मारुति एम्बेसडर ही था, तो पूरी दिल्ली हमें वही घुमाता था दिल्ली। उसके बाद एम्बेसडर में मैं नहीं गया, टैक्सी में यूज होता था। अब होता है कि नहीं होता है, मुझे लगता है अभी भी कहीं कहीं टैक्सी में यूज होता है। अदरवाइज अब तो टैक्सी में सेंट्रो यूज होने लगा है, वैगनार यूज होने लगा है, हर कार। ये जो टूरिज्म वाले ना, ओला उबर वाले ने कोई कार नहीं छोड़ा। वरना ना सर पहले ऐसा था, मतलब आई ऑल्सो हैड दिस नोशन कि ये जो एक कार आती थी इंडिका, राइट, तो ये कैब ही होती है, लेकिन अब तो सबका कार जो है वो कैब है। यस, इनोवा से लेके टोयोटा तक कैब में यूज होता है, फॉर्च्यूनर, इनोवा सब। यस 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 यस, राइट। सब कार को आपको एटोइस एक कंपनी है, एटोइस। यस सर, उसको भी मैंने देखा, हर कार, ऐसा कोई कार नहीं है जो कैब ओला और उबर वालों ने छोड़ा। नहीं सर, सारा है उनके पास सीट्स के अकॉर्डिंग। राइट। सो 1990 से पहले मारुति हुआ करता था, और एक कार और होता था जिसको हम बोलते थे मारुति, एंड एक कार और हुआ करता था, मैं बोल गया, देखिए मेरे मुंह में 40 आ रहा है, नहीं 40 नहीं था, होंडा, ह्यूंडई, होंडा मारुति था, और एक था, और बताइए ना कार का, फोर्ड बाद में आया। एनीवे, एक और कार था, अब देख 90 मार लीजिएगा गूगल पे, हाँ, कार अवेलेबल इन इंडिया बिफोर 1990, नहीं तो एक मारुति हुआ करती थी, एक और दूसरी कार हुआ करती थी, उसके अलावा कोई कार नहीं होती थी। रोड पूरा खाली हुआ करता था, लोग साइकिल से जल्दी जाया करते थे, राइट। यस, बाइक नहीं हुआ करते थे, बाइक में राजदूत हुआ करता था। अब राजदूत दिखता है क्या कहीं पे? राजदूत मतलब? राजदूत, अच्छा, वो जो मैसेंजर। बाइक नहीं, बाइक हुआ करती, जैसे बाइक है ना, जैसे एक्टिवा है अभी, ओके ओके, या हीरो होंडा का बाइक है, होंडा का बाइक है ना, सुजुकी का बाइक है। पहले ये राजदूत बाइक हुआ करता था, ओके, राइट। और आप देखिए इंडिया में कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बॉर्डर वाज द प्रॉब्लम, स्टेट सोवर्निटी वाज द इशू, right? State did not allow the world market to enter India, right? And we see 1990 में the Indian state liberalized its market, right? Yes, sir. So Indian state liberalized its market, and Indian government privatized many things, and consequences is
globalization. Globalization is a consequences of liberalization and privatization. हम बोलते हैं ना LPG. Globalization is a consequences. Okay, so let's talk about what happened to state sovereignty. Has state sovereignty declined, erosioned in the wake of globalization? There are three perspectives. मैं पढ़ा चुका हूँ ये 3 perspective जब आपको sovereignty पढ़ा रहा था. Do you remember what is sovereignty? Right. So there are 3 views. One is globalism or globalist view. Globalist view argue that जब ये ग्लोबलिस्ट क्या कहते हैं कि देखिए ग्लोबलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका है. ये जो इंटरनेशनल एक्टर है TNCs, MNCs, राइट, MNCs और मान लीजिए WTO, IMF, राइट, ये सब डिसाइड करते हैं. ये सब एक्टर है. दे आर द डिसीजन मेकर्स. क्या है ये सब? डिसीजन मेकर्स है. और जो स्टेट है वो केवल डिसीजन लेता है. स्टेट इज ओनली डिसीजन टेकर्स, राइट. सो स्टेट सोवरेनिटी हैज डिक्लाइंड, इरोजनड इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. डिड यू गेट द आइडिया? नहीं सर, एक बार फिर हिंदी में बता दीजिए. अच्छा, देखिए पहले यहाँ तो बात की हम लोग कि देखिए मॉडर्न वर्ल्ड एक्चुअली जब 90s इंडिया के टर्म में लीजिए तो 90s के बाद देखिए किस तरह से हमारा जो लाइफ है वो बदल गया है, राइट. yes, और लाइफ क्यों बदल गया है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. यस, बदला है कि नहीं बदला है ग्लोबलाइजेशन के कारण, राइट. यस. तो ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं था? क्योंकि स्टेट सोवरेनिटी जो थी वो डिसाइड करती थी. स्टेट जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट है उसका तूती बोलता था, राइट. उसकी एक लेजिटिमेसी होती थी, राइट. और ये जो सोवरेनिटी, लेजिटिमेसी और डेमोक्रेसी, ये सारा स्टेट बाउंड्री के साथ फिक्स था, स्टेट टेरिटरी के साथ. क्योंकि देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है लेकिन हमारे बगल में नहीं था, मतलब पाकिस्तान में या म्यांमार में, राइट. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या स्टेट सोवरेनिटी खत्म हो गई है, मतलब कम हो गई है? ये सवाल है कि हैज स्टेट सोवरेनिटी इरोजनड इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नॉट? स्टेट सोवरेनिटी अभी भी है, मेंटेन है भारत की. भारत के एग्जांपल लेते हैं. वैसे हम किसी और कंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं, पाकिस्तान का, म्यांमार का, इंडोनेशिया का, राइट, माली का, किसी भी कंट्री का नाम ले सकते हैं, राइट. यस सर. तो ये जो सवाल है इसमें 3 जवाब है. एक जवाब है कि हाँ भाई स्टेट सोवरेनिटी खत्म हो रहा है. तो कैसे खत्म हो रहा है? अगर मैं कि कोई बोले कि स्टेट सोवरेनिटी खत्म हो रहा है, इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो अब इंडिया की सोवरेनिटी नहीं रही. कैसे नहीं रही? तो कहते हैं कि भाई यार देखिए अब जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन लेने वाले लोग IMF हैं, राइट. जो इंटरनेशनल एक्टर्स है, ग्लोबल एक्टर्स, दे टेक डिसीजन. IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, yes, WTO, right, TNCs, transnational companies, MNCs, multinational companies, right. ये सब डिसीजन लेता है. और स्टेट क्या करता है? दे आर द डिसीजन मेकर्स. ये डिसीजन बनाता है. स्टेट क्या करता है? स्टेट आर डिसीजन टेकर्स. स्टेट आर डिसीजन टेकर्स. स्टेट आर नॉट डिसीजन मेकर्स. फॉर्म में तो नहीं बोला जा सकता कि बिल्कुल टेकर्स ही हैं. हम लोग तो अपोज भी करते हैं काफी चीजों. या हम लोग अपोज भी करते हैं, बट एक पर्सपेक्टिव है. देखिए दूसरा पर्सपेक्टिव अभी में आएंगे तो बताएंगे आपको. एक पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है. देयर आर 3 पर्सपेक्टिव. एनालाइजेशन हम बाद में करेंगे. 3 पर्सपेक्टिव है. एक पर्सपेक्टिव है ग्लोबलिस्ट का, राइट. अब ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि we live in a increasing global age in which states are being subjected to huge economic and political process of change, right. And the sovereignty are eroding,
right? And the state sovereignty are diminishing, कम हो रहा है. Why? क्योंकि जो ग्लोबल एक्टर्स हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, TNCs, MNCs, they are the decision makers. I'm giving you example. Let me take this side. You can oppose it, right? You know the Washington Consensus, right? Why India opened its economy? Consensus, right? Why India opened its economy? Because India में एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी, राइट? हमारे पास मात्र 2 वीक का रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व, राइट? और हमने IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इनके बातें मान ली थी, राइट? इन वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? ये वाशिंगटन कंसेंसस क्या था? हमको 10 प्रोग्राम बोला था करने के लिए, 10 काम करने के लिए बोला था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दवाई दी थी हमें और बोला कि ये दवाई खाओ और स्वस्थ हो जाओ, तुम बीमार हो, राइट? तुम क्या बीमार हो? तुम बीमार हो कि अपनी इकोनॉमी तुमने खोल के नहीं रखा है. होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या कर रहे थे? अरे तुम अपने खिड़की खोल के रखते हो, अपने दरवाजा खोल के बंद करके रखते हो, खोल के रखो सब, ताकि लोग बाहर से आ सके, तुमसे पूछ सके कैसे हो, कुछ भी. हाँ, वो तुम जो बगल में अगर टमाटर ले लो तो सुनाई दे तो तुम जाके उससे टमाटर ले लो, है ना? यस सर. तो कहा कि ये जो 10 प्रिस्क्रिप्शन था उसमें क्या था? you have to devalue money, you have to open it, you have to de-license, right? De-licensing industries, you have to liberalize market, foreign investment करना है, right? और जो मार्केट रिफॉर्म करना है, right? आपको प्राइवेटाइजेशन करना है, right? आपको कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना है जॉब्स का, आपको स्पेंडिंग कट करना है, राइट? ये सब पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन थे. अब डिसीजन तो बनाया इसने, इंडिया ने क्या किया? डिसीजन लिया केवल, राइट? इंडिया ने क्या कर दिया? ठीक है, अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी. पता है 1990 के बाद से ही सरकारी नौकरी कम आने लगी थी. यू रिमेम्बर 1990 से पहले 2% जो जॉब थी वो सरकारी आया करती थी, 2% जॉब. आजकल कितना परसेंट जॉब सरकारी आती है पता है आपको? No. 0.25 and even less than that. तभी तो प्राइवेट सारा चीज प्राइवेट हो गया, राइट? इवन दो जो सरकारी में है फॉर लाइक एजुकेशन, जो सरकार देख रही है, राइट? एजुकेशन और हेल्थ, it has been hugely privatized, right? So you see the super specialty hospital, the Max, yes, or Fortis or blah and blah, right? And if yes, you even the government health health hospitals, you can see the doctors are on contract. Yes, अब तो सर ये हर जगह पे ये right? है वो डीडी में भी ऐसे ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट. एजुकेशन में जितने भी टीचर्स हैं, यू सी द टीचर्स एड हॉक, राइट? एड हॉक दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे सारे गेस्ट टीचर्स हैं, राइट? यस सर, सारे गेस्ट टीचर्स हैं. कितना भी हल्ला कर लो, चिल्ला कर लो, सरकार नहीं करेगी. हाँ, तो एक्चुअली who made the decision? It's IMF or World Bank made the decision, and here the state came to take decisions कि yes, हम लोग अब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करेंगे जॉब्स को, राइट? हम अब जॉब्स नहीं देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम डी लाइसेंसिंग करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, राइट? एंड अगर आप 10 साल में देखो आपके क्या हाल है,
ऐसा मुझे लगता है मेरे दादाजी ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते थे जो वो बोल सकते थे कि मैं चाइना का ये सामान यूज करता हूँ, जापान का ये सामान यूज करता हूँ, अमेरिका का ये सामान यूज करता हूँ, नहीं था वो टाइम। आज मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, यस, और प्राउडली बोल रहा हूँ, और जैसे भी बोल रहा हूँ, you know, there should be no proud and no nothing, right? We are using our ideas, our choices are not ours. It has been shaped by globalization, right? The flow Yes, of ideas, because आप पहले एडवर्टाइजमेंट देखते, right? Isn't it? कि कैसे yes, जो कंप्यूटर है वो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे इंटरनेट ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इवन जो अभी तक जो पुअर है, दे कांट अफोर्ड, बहुत मेहनत लगता है रोटी भी अफोर्ड करने में, बट दे ट्राई टू बाय अ मोबाइल so that their child can access online education. yes, sir. Isn't it? Right? So they know that this education is good. Right? Yes, So if this idea has been shaped by the globalization. So globalist जो है, उस वक्त मैंने आपको नाम भी लिखवाया था मार्टिन वॉल्फ का, जब मैंने सोवर्निटी पढ़ाई थी, कि state sovereignty as diminishing. Right? Why state sovereignty are diminishing? Because the nation state is not a final actor. Nation state is not a final actor in deciding, the policies, public policies. Who is deciding public policies? Now, Or even your foreign policy? Who deciding foreign policy? Who deciding your relationship with other states? It is, globalization. Right? It is trade. Right? It is technology. Right? It is MNCs. It is TNCs and TNCs. It is, IMF and WTO and or World Bank. They are the, the United Nations, right? For NATO, for example, NATO. These are the international, for example, Red Cross or abhi WHO का बड़ा role है, right? These all are shaping the choice of the state. It's not only individual state. State, nation state का भी जो choice है, public policy है, they are being shaped by the globalization. Got the idea? Yes, sir. And the state sovereignty is decreasing. Right? Yes. आपको लिखना है इसमें, या ऑलरेडी मैंने सोवर्निटी जब पढ़ाई थी तो लिखाई थी? अगर लिखना है तो you can write it down. इंट्रो वगैरह नहीं लिखेंगे, वो जो ऊपर मतलब? हाँ लिखेंगे. अच्छा, मैं लिखाता हूँ, रुकिए. अभी ग्लोबलाइजेशन तो हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो है. या व्हाट वी कैन डू सर इज कि जैसे हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो आराम से 1 घंटा 10 मिनट ऐसे कुछ पढ़ सकते हैं, और बाकी इन द रेस्ट ऑफ द टाइम वी कैन राइट. ओके, पहले एक बार समझ लिया देन राइट. ऐसा तो आपने समझ लिया, चल थोड़ा समझा ही देते हैं, थोड़ा देर और समझा देता हूँ. हाँ, फिर लिखवा. राइट? सो एक आइडिया है कि ग्लोबलिज्म का. दूसरा है एंटी ग्लोबलिज्म. ये कहते हैं कि देखिए भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि स्टेट सोवर्निटी खत्म हो गई है. स्टेट सोवर्निटी आर ऑलरेडी इंटैक्ट. राइट? स्टेट सोवर्निटी आर ओनली इंटैक्ट. Okay, there are players, global players, but state are able to whether reject the idea and accept the idea. State is really a player. State अगर मना कर देगा तो मना कर देगा. तो स्टेट अगर मना कर देगा तो थोड़ी घुस के आ जाएगा. मान लीजिए अगर स्टेट मना कर दिया कि ओके, कल से हम सैमसंग का कोई भी सामान नहीं लेंगे, तो सैमसंग वाले थोड़ी घुस जाएंगे स्टेट में, नहीं घुस पाएंगे. तो स्टेट सोवर्निटी इज स्टिल इंटैक्ट. तीसरा जो है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट. क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट. ये कहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल IMF और
और WTO करता है, ये मध्यम मार्ग वाले हैं, ना ये इनकी बात मानते हैं ना ये इनकी बात मानते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो सही में न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज सब, बट उसमें भी स्टेट का, ऐसा नहीं कि स्टेट का भी जो सोवरेनिटी गायब हो गया, नहीं, स्टेट सोवरेनिटी भी है, एंड दे दिस टू आर इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, they are transforming, right? So state is transforming, even globalization is transforming the world, so that is called transformationalization, right? तो ये नहीं बता रहे मतलब कि स्टेट जो है अभी उसकी सोवरेनिटी है या नहीं, मतलब उस पे ये कह रहे हैं कि देखिए स्टेट की सोवरेनिटी भी है, पूरी गायब नहीं हो चुकी है, स्टेट की सोवरेनिटी भी है, और ग्लोबलाइजेशन स्टेट बदल भी रहा है चीजों को, तो पूरा एक्चुअली ट्रांजिशन फेज है, ये बदल रहा है चीजें, राइट? Got the idea? Now let me tell you few more thing that what is globalization. अब हम फिर से ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. So globalization means free flow of goods, ideas, technology, social practices across national borders, right? And if you see the drugs, crime, sex, war, protest movements, terrorism, disease, people, ideas, images, you know, news, information, entertainment, pollution, even pollution, how pollution is traveling from one country to another country, right? Goods and monies, yes, all travel, you know, around the globe, right? And they are crossing national boundaries and connecting the world on an unprecedented scale. ऐसा कभी नहीं हुआ था. Are you getting the point? Yes, sir. Now I'm teaching you globalization. अभी तो बात हो रही थी कि globalization means free flow of goods, ideas, technology, and social practices across the national borders. For example, the disease, how the COVID-19 has traveled from one country to another country, right? In such a short span of time, right? Even protest movements, जब farmers movement हुआ तो अमेरिका में लोग कुछ बोल रहे थे, right? दुनिया की एक जगह पे कहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जगह भी चला जाता है, right? So they are crossing national boundaries and connecting the world on an unprecedented scale and with previously unimaginable speed. जिस स्पीड से जा रहा है वो आप 50 साल पहले और 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, राइट? मान लीजिए कल कोई प्रोडक्ट बनती है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एप्पल एक कंपनी है जो आईफोन बनाती है, yes, आईफोन बनाती है मैं बताऊं, और अगले महीने के अंदर ही इंडिया में अवेलेबल हो जाता है. इस स्पीड से आता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था. अमेरिकन प्रोडक्ट बहुत हार्डली किसी को मिला करती थी, लेकिन टाइम बहुत लगता था. अब तो प्रोडक्ट बना और बिक गया जस्ट. अमेरिका, ये चाइना में जो MI की मोबाइल बनती है, आप देखिएगा, आपको पता है MI मोबाइल में वो लगती है ना, लाइन लगती है वहां पर MI के साइट पे जाके, प्री बुकिंग भी होती है, एप्पल की प्री बुकिंग भी होती है. यस, वो कितने देर में खत्म हो जाता है, किस स्पीड में वो बुकिंग होती है, राइट? And so that this cross free flow of this goods, ideas, technology, and social practices has moved, and that moved unprecedented and with an unimaginable speed. The life of ordinary people has changed everywhere in the world, right? And that was shaped by events, decisions, and action taken at one place far away from where they live and work. कोई भी अगर कोई डिसीजन अमेरिका में होता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है. वन एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई मान लीजिए न्यूक्लियर पे बात चल रही होती है, न्यूक्लियर एनर्जी पे या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बात चल रही होती है अमेरिका में, और ये
कान खड़े पूरी दुनिया की हो जाती है, राइट? हाँ, even culture, economies, politics appear to be merged across the globe through the rapid exchange of information, ideas, knowledge, investment, right? And even the money, आपके पॉकेट में जो मनी है उसका जो वैल्यू है, it's not decided by India, right? It depends on the fluctuation in the global financial market. मान लीजिए आपके पास पॉकेट में कुछ मनी है, that not be will stagnant. Whether either it will devalue or it will go up, right? Yes, sir. Are you getting my point? Yes. Yeah. So अगर क्या ये ऐसा है, या कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जो लोग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बाहर रह रहे हैं वो कैसे देखते हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन है, क्या अमेरिकनाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन? यहाँ पे देखिए मैगडी यूरोप, यहाँ पे अगर कोई कंपनी है तो देखिए सारा यदि यूरोप का है, अमेरिका का है, जापान का है, नहीं तो चाइना का है, और साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया भी अमेरिका नहीं है, एनीवे सैमसंग और एलजी। क्या ये अमेरिकनाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का, राइट? क्या हम मान लीजिए कोको कोला पी रहे हैं, या ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? कि हाउ कैन वी define globalization? Is globalization characterized by homogenization of economy and culture around the world? कि कहीं भी जाइए तो आपको एडिडास का शू मिल जाएगा, आपको कोको कोला मिल जाएगा, आपको पेप्सी मिल जाएगा। Are you getting my point? Yes, sir. So is it that globalization characterized by homogenization of economy and culture? Or is it that increased interconnectedness of social life due to changes in economy, technology and culture? Are we increasingly interconnected? Yeah, क्या बोले? Sir, I'm saying कि ये सब ऐसा इतना मतलब क्वेश्चन मार्क क्यों है? मैं हम ये सब एक्चुअली पूछ रहे हैं, हाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या होमोजेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड कल्चर है, कि दुनिया का कोई भी कहीं भी लोग आए तो डेल यूज करे या कोको कोला पी ले या मैकडी का बर्गर खा ले? अगर ऐसा है तो इट इज थ्रेटनिंग टू द इंडिजिनियस कल्चर, isn't it? Yes, sir. Right? Or is it that globalization is characterized by increased interconnectedness? कि हमारे जो कनेक्टेडनेस है वो बढ़ गया है, इकोनॉमी में भी, टेक्नोलॉजी में भी और कल्चर में भी। और इज इट दैट इट इज अनकैपिटल, और इज इट दैट globalization is characterized by Americanization and McDonaldization of the world? क्या ये हो रहा है? So there are different things we have discussed, right? Okay. Right? एक बार आप ये अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट, मुझे 5 मिनट और दीजिए, right? So globalization, for many people globalization is many things, right? So globalization, globalization means global interconnectedness. Globalization means very shift in a spatial form of social relations. Globalization means very exercise of power on global scale. Globalization is a multi-dimensional process. Globalization is not only one thing, it is a many things. It is a multi-dimensional, right? And it applies on the whole range of social relations, cultural relations, political relations and economic relations, right? Yes, sir. Right. So the entire globalization has been discussed on 4 headings. 4 हेडिंग के द्वारा ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। स्कॉलर ने अलग अलग जो डिबेट है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, और मैं बता दूं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कितना टेक्स्ट है पता है? कम से कम 4-5 हजार टेक्स्ट होगा,
Text in the sense books. Books, right? Right. So ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैं ग्लोबलाइजेशन और सिटीजनशिप के ऊपर इतना वर्क हो रखा है, पूरे आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन का है वो 4 भागों में हम बांट सकते हैं, 4 ब्रॉडर हेडिंग के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है? Stretched social relation. Stretched social relation. It is not regionalization. Right. So what is a stretched social relation? It means, you know, existence of culture, economy, and political network of connection across the world. For example, you know, I'm using MI mobile. You are also using MI mobile. कोई कोरिया में होगा वो भी MI मोबाइल यूज कर रहा होगा, कोई जापान में होगा ये वो भी MI मोबाइल होगा. तो ये सोशल रिलेशनशिप है, ये स्ट्रेच हो रहा है. राइट. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशन. क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम यहाँ भी है, ऑक्सीजन पॉल्यूशन की प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की, क्लाइमेट चेंज का. वो कोरिया में भी है, वो जापान में भी है, यूएस में भी है, थर्ड वर्ल्ड में भी है, कहीं पे भी जाइए तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है. राइट. Yes, sir. That is also a common thing. New social movements is also are common thing. Right. TNC, MNC कहीं पे भी जाइए आपको ये अमेजन इंडिया में भी सर्व करता है, पाकिस्तान में भी सर्व करता है, और अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सर्व करता है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं है? रीजनलाइजेशन नहीं है. रीजनलाइजेशन मतलब होता है कि इंक्रीज्ड इंटरकनेक्शंस बिटवीन स्टेट दैट बॉर्डर्स ईच अदर, लाइक सार्क. अब सार्क के कंट्री एक दूसरे से बॉर्डर लगाते हैं. Yes. अब इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन हो गया उसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कहेंगे. या मान लीजिए ईयू, यूरोपियन यूनियन, सारे बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हैं. अब इनके बीच में जो यूरोपियन यूनियन बन गया उसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कहेंगे. हम ग्लोबलाइजेशन तब कहेंगे, यस, कि वो सोशल रिलेशन वर्ल्ड वाइड स्ट्रेच्ड हो. राइट. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशनशिप. राइट. मतलब ये भी तो है, तो ये भी हमारी बाउंड्री से मतलब बाहर. तो अगर हमारा रिलेशन इनके साथ है तो आई थिंक किनके साथ? जस्ट लाइक सार्क और ईयू. ईयू से तो हमारा रिलेशनशिप फॉरेन रिलेशनशिप हो सकता है, बट आवर बाउंड्री नहीं है. बट सार्क, फॉर एग्जांपल सार्क की जो कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब, तो इनके साथ अगर मतलब हमारा रिलेशन है कुछ और अगर इनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़े, राइट, सार्क के बीच में या ईयू के बीच में बढ़ा हुआ है, ईयू के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं. राइट. ईयू में जर्मनी के लोग फ्रांस जा सकता है, फ्रांस के लोग बेल्जियम जा सकता है, बेल्जियम के लोग इटली जा सकता है, इटली के लोग स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, एंड विदाउट एनी वीजा, एनी पासपोर्ट. यस. सो कनेक्टेडनेस तो बढ़ गया, लेकिन उसको ग्लोबलाइजेशन हम नहीं कहेंगे. हम ग्लोबलाइजेशन तभी कहेंगे जब वो ग्लोबल लेवल पर हो, अक्रॉस द वर्ल्ड हो. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज. द क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इश्यू. कोविड, मास्क यहां भी लगा रहे हैं, अमेरिका में भी लगता है, राइट, जापान वाले भी लगा रहे हैं मास्क. सो इट इज अ स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशनशिप. Right. So the social, economic, and political process in society are increasingly stretched across nation boundaries. Right. Decision taking one place on one side of the world having significant impact on the other. For example, you know, अभी हमने आपने सुना होगा कि वैक्सीन्स बना है, राइट. वो वैक्सीन्स बाहर गए हैं, तो वैक्सीन्स इंडिया में बन रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी जाता है, जो वैक्सीनेशन वहां भी होना है. राइट. उसका डेवलपमेंट स्पुतनिक कहां पे हुआ? स्पुतनिक रशिया में, वो इंडिया, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया. हाँ, फॉर एग्जाम्पल WTO या वर्ल्ड बैंक या IMF,
या 9/11, 9/11 was a really globalized attack. आपको पता है कितने देश के लोग मरे वहां पर? इवन जो 26/11 था, अटैक हुआ इंडिया में, लेकिन मरने वाले दुनिया के बहुत सारी जगह के लोग थे, राइट? So we can identify ki how the social relationship is really stretched. It has been interconnected. अब एक ताज का होटल है, वहां पूरी दुनिया के लोग रहते हैं उस ताज होटल में, मुंबई में. Yes. Right. So we can call this globalization. On the other hand, regionalization can be identified as interconnectedness between geographical contiguous state. Geographical contiguous state के बीच में हम रीजनलाइजेशन बोल सकते हैं. जैसे यूरोप का अपना है, साउथ एशिया का अपना है, साउथ ईस्ट एशिया का अपना है, लैटिन अमेरिका का अपना एक ज्योग्राफिकल कंटिन्यूअस स्टेट है और उनका अपना एक इंटरकनेक्टेडनेस है. सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट रीजनलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशन ग्लोबली एट द वर्ल्ड लेवल. ये कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स. कॉन्टिग्यूअस स्टेट मतलब, अरे इंडिया मान ली साउथ एशिया है. अब साउथ एशिया के जो बॉर्डर हैं, इंडिया का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, चाइना. हाँ, तो ये कॉन्टिग्यूअस स्टेट हो गए ज्योग्राफिकली, राइट? और इनके बीच में ये जो कॉन्टिग्यूअस स्टेट है, इनके बीच में अगर इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा, इसका मतलब ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है. इसका कहने का मतलब कि जो रीजनलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशनशिप, right? That means existence of culture, economy and political network of the connection across the world, right? Like mask lagana, it is a culture at this time and it is around the world. This is we can call globalization, right? Yes sir. Right. So one definition is, अब हम आ गए definition में कि there are जो scholar बांटे हैं ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है कि एक ग्लोबलाइजेशन इज स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशनशिप. सेकेंड डिफिनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्लो. फ्लो मतलब फ्लो मींस वही आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट या फ्लो इज यही कि इधर से उधर गुड्स जाना, सर्विसेज जाना. yes, yeah, exactly. So globalization is intensification of flow. जो गुड्स एंड सर्विसेज पहले भी जाते थे, हम बात किए हैं कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में भी गुड्स फ्लो हुआ करता था, राइट? यहाँ के जो मसाले थे वो यूरोप जाया करते थे, राइट? उसके बाद यहाँ के रॉ मटेरियल यूरोप जाने लगे, राइट? But globalization is identified with intensification of flow. ये जो जाना आना है ये इंटेंसिफाइड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत जल्दी हो गया, right? So this stretching of social relations seems to be associated with intensification of flow and network of interaction and connectedness, right? That transcend nation states. For example, Facebook. What is Facebook? Right? You can talk with any कहीं भी ग्लोब में कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं फेसबुक में. तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था that was intensified. Twitter, right? Right. So this this flow has been intensified, right? Yes sir. तीसरा जो एग्जांपल है कि इट इज इंक्रीजिंग interpenetration, right? So the penetration has been increased globally, right? So increasing extent and intensity of global interaction is changing the geography of the social relationship, right? From local to global and global to local. As social relation stretch, there is an increasing interpretation of economic and social practices, increasing interpenetration,
right? And bringing a distant culture and society face to face with each other at local level, right? For example, हम अभी Google Duo. Have you heard of Google Duo? You must have using it. Yes, sir. मैंने अभी सर कल ही Right? इस पे मुझे बनाया Google So Duo. how you know this Telegram, WhatsApp, right? Yeah. So for you know कहीं भी रहना है, जैसे मेरे मामा लोग रहते थे नेपाल में रहते, right? और हमारा जो बातचीत था मामा लोग से बहुत दिनों हुआ करता था. अब पता है ये जो व्हाट्सएप आ गया है, गूगल डुओ आ गया है, हाँ, पहले फोन पे बात करना बहुत मुश्किल होती थी. अब क्या हो गया, you know how this penetration has increased. अब डेली मतलब करीब करीब सप्ताह में 2 दिन तो बात हो ही जाती है, फेस टू फेस. एक दूसरे को देख लेते हैं, हाँ, दूसरे ने कपड़े क्या लाया, क्या खरीदा, सब कुछ दिखा देते हैं. वो लगता है कि घर में ही है, होता है ना? Yes, sir. Right. So you know this has it is the global penetration, right? We eating pizza. देखिए अब घर में भी अब बैठे बैठे पिज्जा मंगा लीजिए, हाँ, बर्गर खा लीजिए, हॉलीवुड की मूवी देख लीजिए. नेटफ्लिक्स. What is Netflix? Product of globalization. It's a product of globalization, right? Any दुनिया की कहीं भी कोई भी चीज आप नेटफ्लिक्स पे एक्सेस करते हैं. कोला, हाँ, पॉप म्यूजिक सुनते हैं हम, BBC, CNN. How the globalization has increased penetration, interpenetration, right? So globalization means interpenetration, right? Yes, sir. One thing must be noted that this increasing Western culture increasingly reflect cultural influence from across the world. One scholar, his name is Mustafawi, he talked about a new colonization of the West over the East without actual physical occupation of territory. ये कहते हैं कि देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ colonialism, a new form of imperialism, जहां पर जो वेस्ट है वो ईस्ट के ऊपर क्या कर रहा है, करते हैं, गवर्न कर रहा है, राइट? कल्चरल इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट? सो आप पूरा ईस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट, राइट? सो बिना टेरिटरी को ऑक्युपाई किए यहाँ का सारा जो इकोनॉमी है कहाँ जाता है पैसा? आप जो खरीदते हैं, या मैं खरीदता हूँ डेल का या एडिडास का या एमआई का फोन, वो पैसा जाता कहाँ है? बाहर की कंट्रीज में. It goes to the west, right? So it is basically a new form of colonization. It is an old form of this new form of colonization, right? Without occupying a territory, right? So तीन definition हो गया. एक तो intensification, पहला तो social stress social relationship, दूसरा हो गया intensification of law, तीसरा हो गया increasing penetration, और चौथा हो गया globalization is increased institutional infrastructure to regulate the world. अब ये कहता है, फोर्थ डिफिनेशन कहता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वेरियस लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक बना है जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है. अभी मैंने बताया कि आपके पास जो मनी है वो भी रेगुलेट होता है, राइट? यस सर. इवन गूगल, राइट? आप जीमेल है आपका, होगा? यस सर. जीमेल अपने आप बदल जाता है. आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जीमेल के फीचर्स अपने आप बदल जाते हैं? अपडेट, यस, हो जाते हैं. यस. So globalization is all about increased institutional framework to regulate the globe. यूनाइटेड नेशन कैसे रेगुलेट करता है? अब जैसे WHO रेगुलेट कर रहा है हेल्थ को लेकर के, UN के जो इंस्टीट्यूशन है रेफ्यूजी को लेकर के रेगुलेट करता है. आपने नाम सुना होगा यूनेस्को का. यूनेस्को एजुकेशन को रेगुलेट करता है, राइट?
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल साइट्स को रेगुलेट करते हैं। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का नाम सुना होगा आपने? यस। राइट। सो जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज मेनी थिंग, इट इज अ खिचड़ी अगेन, राइट? राइट। सो नाउ शुड वी राइट नाउ? लिखवा दूं? ये फोर्थ वाला मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये अमालगमेशन टाइप्स, मतलब मैंने चारों अमालगमेशन का। फोर्थ मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रेगुलेट द वर्ल्ड। Globalization means increased institutional infrastructure to regulate the world, like IMF and World Bank. World Bank regulate the financial market, right? WTO regulate the international trade. WHO भी हो सकता है। Yes, WHO regulate the international health, right? Yes, sir. United Nations regulate the behavior of the actor, इराक का एक्टर, ईरान का एक्टर, हमें भी यूएन कभी कुछ कह देता है, पाकिस्तान को भी कुछ कह देता है, इजराइल को कह देता है, राइट? सो यूएन इज आल्सो रेगुलेटिंग. सो ग्लोबलाइजेशन मींस this increased institutional infrastructure to regulate the world. So there are four meaning of globalization. Globalization is a stressed social relationship. Globalization is intensification of law. Globalization is increased interpenetration. Globalization is increased institutional infrastructure to regulate the world. Clear? थोड़ा clear? Yes, sir. Yes. तो अब ये ग्लोबलाइजेशन का ये चार मतलब है, राइट? अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है हम एडिडास यूज करते हैं, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन एकेडमिक डिबेट में जब एकेडमिक डिबेट होता है तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बेसिकली चार भागों में बांट दिया गया है, राइट? सो मुझे समझाना इतना ही था। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा आपको 2 पेज 3 पेज लिखवा देना चाहिए, राइट? बहुत है। यस सर। नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं बोल दूंगा अपने आप लिख लेना, फिर आप हो नहीं पाता है, राइट? नहीं सर, एक्चुअली और इसमें तो कंटेंट थोड़ा ज्यादा, तो ये वाला बेटर होगा अगर आप लिखवा दें। हाँ, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, राइट? चलिए लिखिए। और कोई लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो वो मैं लिख लेती हूँ खुद, जैसे मैंने। राइट। नो, आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्टेट। बहुत है इसमें, राइट? लिखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? बट पीपीटी आप पढ़िएगा एक आध बार, हाँ? यस सर, श्योर। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? यस सर, डन। लिखिए in the last 40-50 years, yes sir, in the last 40-50 years there are transformation of social relationship and yes, everyday life. yes sir. In these years, people
living in one corner of world in these years, people living in one corner of the world started access to goods, services, culture, music, etc. produced music, etc. at local level without going anywhere. In these years, people living in one corner of the world started access to goods, services, culture, music at local level without going anywhere in the world. And these goods, services, culture, yes, sir. produced by other part of the world. Yes, sir. And these goods, services, culture are produced by the other part of the world. It means there are free flow of goods and services, ideas, technology, culture, and so on, from one part of the world to another part of the world without taking any hindrances. It is termed as globalization. It is termed as globalization. Yes, sir. Done? Yes. Okay. So, okay, globalization has multiple meanings. Globalization has multiple meanings. Yes. Multiple meanings, right?
or globalization has following meanings. लिख लीजिए या multiple meanings, right? पहला लिखिए. It means free flow of goods, Yes. ideas, technology, and social practices across national borders, Yes, sir. Second लिखिए. It is a traveling of drugs, crime, sex, war, protest, pollution, goods and monies, money across the world. Yes, sir. Third लिखिए. Due to this uninterrupted flow and travel, there are interconnectedness Yes, sir. and one minute, एक word में ढूंढ रहा हूँ, क्या लिखूं हमको. And changed social relationship Yes, sir. including everyday life, has been captured by the word globalization. Yes, sir. Right? Fourth लिखिए. Yes. इसी में fourth लिखिए. Yes. Money, social relationship, food, Yes, sir. everyday consumption, exchange of ideas and information Yes, sir.
many money, social relationship, food, everyday consumption, exchange of ideas and information, you know, और क्या लिखना है, information, are rapidly changing due to globalization. Done? Yes, sir. Yeah. इतना लिखने के बाद दूसरा हेडिंग लिखेंगे हम लोग. एक हेडिंग में इतना ही लिखेंगे. Yes, sir. Done? Yes. Okay. अब पैरा चेंज करके लिखिए कि each globalization Yes. characterized by Yes. जैसे मैंने लिखा ना, is globalization characterized by, कॉलम दे दीजिए, पहला लिखिए the homogenization of economy and culture, the homogenization of economy and culture. क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए. Yes, sir. लिखिए, आगे लिखिए. If it is so, then it may threaten the local economy and culture. If it is not, then it may help in mixing up culture, mixing up economy and culture. समझ में आया? Yes, sir. Yeah, पहला point. So पहला point, is globalization characterized by the homogenization of economy and culture? If it is so, अगर कहते कि हाँ नहीं ये homogenization है, right, then it may threaten the local economy and local culture, right? But Yes, if it sir. is not, then it would be addition, right? होगा कि नहीं? Then it may help in mixing of economy and culture. It may be the additional, complementary thing, right? So, it may be, it may come up global. Continue. हाँ, एक sentence. It may be come up as global as well as local, right? It is termed as globalization. Globalization. Have you heard of this word? Yes, sir. Globalization, right? So अगर वो harm नहीं करता है local culture को, then it's a good one. The local and global both can come and interact each other, right? They can transform the society, right? Yes, sir. Okay, second point लिखिए, इसको erase कर दूं? Yes, sir. Okay. अब लिखिए सेकेंड पॉइंट. क्वेश्चन तो पहले लिख चुके हैं ना, इज ग्लोबलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय? Yes, sir. आपके दूसरा लिखिए, increased interconnectedness of social life.
increased connection of social life, increased connectedness of social life due to changes in economy, technology, and culture. Yes. The life of the people. Sir, 1 second, can I come in 1 minute? Yeah, sure. Go ahead. Yes, sir. So लिखिए, the life of the people is increasingly changing due to increasing changes in economy, technology, and culture. Yes, sir. Done? Yes. Okay. Third point लिखिए, ऊपर तो लिख चुके हैं, is globalization characterized by Yes, sir. और third point लिखिए, unregulated capitalism. Yes, sir. देखिए, in 1960s and 1970s, 70s, the new liberal market economy, new liberal
market economy expanded. The new liberal market economy expanded at global scale. They advocated, or ऐसे लिखिए, the new liberals, also known as market fundamentalists, argued for free market from state regulation and freedom to flow of trade, goods, services, etc. Sir, yes. Done? Yes. Okay. फोर्थ पॉइंट लिखिए. तो ऊपर तो लिख चुके हैं आप. इज ग्लोबलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय? फोर्थ पॉइंट में लिखिए अमेरिकनाइजेशन एंड मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ वर्ल्ड. लिख दिया? एक सेकंड सर. लिखिए. यस सर. लिखिए. फोर्थ पॉइंट में लिखिए. फोर्थ पॉइंट में ये लिख दिया अमेरिकनाइजेशन एंड मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. यस सर. लिखिए. टू many living outside of Europe and America, globalization looks like westernization, or perhaps Americanization. Yes, sir. To many living outside of the Europe and America, globalization looks like westernization or perhaps Americanization. Full stop. America is the sole superpower. Is the sole SOLE, right? Sole superpower of the world, right? Yes, sir. Is it that आपको क्लिक करना है? Is it that the US imposing its economy
technology, goods and services, economy, technology, goods and services, culture on the third world. Question लगा दीजिएगा. Is it that the US imposing its economy, technology, goods and services, culture on the third world? Done, sir. देखिए, scholar like मुस्तफे, कहाँ पर मैंने लिखा था उनका नाम, स्पेलिंग देख लेता हूँ 1 मिनट. मुस्तफे, देखिए, scholar like मुस्तफे ये नाम लिखा है. A scholar like Mustafavi argues that globalization is a new form of colonization. Scholar like Mustafavi argues that globalization is a new form of colonization of the West over the East. Yes, sir. Without actual physical occupation of territory. Without actual physical occupation of territory. Yes, sir. Done? Yes. समझ में आया कुछ? Yes, sir. So अब लिखेगा, नीचे पैरा बदल के लिखेगा, therefore Yes, sir. एक मिनट लिखवा, मैं माइंड में स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कैसे इसको लिखवा. लिखिए, therefore globalization means 1 minute. Globalization means different thing to different people. Depends on how do you look at the process of global interconnection, comma, Yes, sir. changing social relationship, and exercise of power on a global scale. Right? Yes. It is a multi-dimensional. It is a multi-dimensional. Done? Yes, sir.
अब लिखिए there are there are consensus about conceptualization of the term globalization. There are consensus about the conceptualization of the term globalization, and it has been described in 4 broader headings. Para change करके लिखिएगा, right? There are consensus about conceptualization of term globalization, and it has been described in 4 broader headings. Yes, sir. पहला लिखिए, globalization is a stretched social relations, not regionalization. Globalization is stretched social relations, not regionalization. Yes, It means the existence of culture, economic and political networks of connection across the world. Yes, sir. For example, EG लिख दीजिएगा, EG मतलब example given, हाँ? Yes, sir. EG का मतलब होता है example given, right? Yes, sir. EG means climate change, new social movements. Yes, sir. PNCs, MNCs. Let's stop. Yes, sir. Okay, on the other hand, regionalization means, Yes, sir. increased interconnection between states that border on each other, like EU, SAARC. Yes, sir. Right? Second point इसी में लिखिएगा. Cultural, economic and political process in society. Cultural, economic and political process in society are increasingly stretched across nation-state boundaries. Cultural, economic and political processes in society are increasingly stretched across nation-state boundaries, so that events and decisions taking place on one side of the world have significant impact on the other. Cultural, economic and political processes in society are increasingly stretched across nation-state boundaries, so that events and decisions taking place on one side of the world have a significant impact on the other. For example, or e.g., WTO, World Bank, IMF, 9/11 or 26/11 incident. Yes, sir. On the other hand, full stop डालिएगा, इसको बाद लिखिए. On the other hand,
Yes, sir. Regionalization can be defined as interconnectedness between Yes, sir. geographically contiguous states. Geographical contiguous states. Example, यहाँ पे full stop डालिएगा, e.g. लिखेगा, यहाँ लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूरोप. Yes. तो बेसिक डिफरेंस ये था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है. रीजनलाइजेशन जो है वो केवल रीजनल लेवल पे है, राइट, जिसका बॉर्डर आपस में मिलता रहता हो. जैसे सार्क का बॉर्डर मिलता है, तो सार्क के बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको हम रीजनलाइजेशन कहेंगे. ईयू के बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको हम रीजनलाइजेशन कहेंगे. बट जब कल्चर, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल नेटवर्क जो कनेक्शन हो अक्रॉस द वर्ल्ड हो, लाइक क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट चेंज पर जो नेटवर्क है, पॉलिटिकल नेटवर्क, वो पूरा वर्ल्ड वाइड है, राइट. Yes, sir. लाइक कोविड पे जो आप मास्क पहनना इज अ ग्लोबल फेनोमेना, राइट. Yes. सो रीजनलाइजेशन इज अ लोकल, स्टेट का बॉर्डर जहां पर कंट्री ज्योग्राफिकली कॉन्टिग्युअस हो, राइट, जहां पर स्टेट का बॉर्डर आपस में मिलता हो, उनको लेकर के जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको हम रीजनलाइजेशन बोलेंगे. और ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे जब जो ये स्ट्रेच्ड सोशल रिलेशन है वो अक्रॉस नेशन स्टेट हो, राइट. गॉट द आइडिया? Yes, sir. ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा. Globalization is intensification of flow. Globalization is intensification of flow. लिखिए. The stretching of social relations seems to be associated with an intensification of flows and network of interaction and interconnectedness that transcend nation state. Stretching of social relations seems to be associated with an intensification of flow and network of interaction and interconnectedness that transcend nation states. For example, Facebook, Twitter, Samsung, Sony, Dell, कोई भी लिख सकते हैं. How this flow has been intensified, right? Apple, right? Nokia, MI, कुछ भी लिख सकते हैं कि how the flow has been intensified. Got the idea? Yes, sir. तो third point लिखिए. Globalization is increasing interpenetration. Globalization is increasing interpenetration. देखिए, the increasing extent and intensity of global interaction, is changing the geography of the relationship. The increasing extent and intensity of global interactions is changing the geography of relationship between the local and global.
The increasing extent and intensity of global interactions is changing the geography of the relationship between the local and the global. Yes, sir. Full stop. As social relationship stretch, stretcher मतलब खींचना, मतलब लग रहा है stretch का. Yes, sir. As social relationship stretch, there is an increasing interpenetration of economic and social practices. Increasing interpenetration of economic and social practices, bringing distant culture, bringing distant culture and societies face to face. Bringing distant cultures and societies face to face with each other at local level. For example, लिखिएगा. Yes, sir. लिखिएगा Google Duo. Example given लिखिएगा. Google Duo. और हम अभी क्या बहुत यूज करते हैं ना, आपको पता है क्या यूज करते हैं जब सेमिनार होता है, वेबिनार? हम गूगल जूम, यस लिखिए जूम, यस जूम. और एक चीज हम यूज करते हैं गूगल पे, उसको क्या बोलते हैं हम? गूगल का डुओ यूज करते हैं, गूगल जूम यूज करते हैं, और एक यूज करते हैं गूगल का जो प्लेटफॉर्म है. I don't know other one. बस No, there is. No. हम है तो वो 6 महीने क्लास लिए हैं मैंने इसके ऊपर. गूगल गूगल डुओ नहीं, गूगल जूम अलग है वेबसाइट, एक गूगल पे है ना. Anyway, so you got the idea. Google Duo, Zoom, right? Yes, sir. Pizza, burger, Coca-Cola. Coca-Cola ठंडा मतलब Coca-Cola, right? Yes, sir. Hollywood, BBC, Al Jazeera. All these are, how the penetration is happening, right? Fine. Yes, sir. Okay. The last point is globalization is increased institutional infrastructure. Globalization is increased institutional infrastructure to regulate the world. लिख लिया. Globalization is increased institutional infrastructure to regulate the world, right? Yes. इसमें लिखिए the global actors like World Bank, like the World Bank लिखते हैं. The World Bank, पहला ये लिखिए. The global actors like the World Bank, the IMF, right, regulating global finance. दूसरा लिखिए WTO regulates global trade. तीसरा लिखिए the United Nations, the UN regulates
behavior of the state. Its organization or its branch, like WHO or WFO, FA, World Food Association है ना, WFO है, World Food Organization, O है, WFO, right? और also और हाँ, और मैंने यूनेस्को बोला था ना, UNESCO. UNESCO regulates health, food and education respectively. Right? Yes. Next point लिखिएगा. There are international non-governmental organizations Yes, sir. like Red Cross, Yes, sir. also, or Human Rights Watch, World Human Rights Watch, or Friends of Earth, also influence the globe. Right? Yes, sir. Yeah. So there are 4 meaning. और अभी तक मैं मीनिंग ही समझा रहा हूँ कि ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है. मतलब क्या मीनिंग है, आप भी अपना एक मीनिंग लगा सकती हैं. राइट? ओके. मैंने कहा कि बहुत सारे मीनिंग है ग्लोबलाइजेशन का. यू नो इट, मैंने बात, डिफरेंट पीपल look at the globalization with a differently, with the different lenses. Right? Yes, sir. So got the idea what is globalization? अभी मैंने बस यही बताया आपको ग्लोबलाइजेशन क्या है आज. समझ में आया? Yes, sir. ओके. अब जो सिग्निफिकेंट पॉइंट निकल के आया है हमारे पास, राइट, कि ग्लोबलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट अ शिफ्ट इन द ज्योग्राफी, यानी कि जो पहले बॉर्डर था वो अब बॉर्डर उतना वैल्यू नहीं रह गया. राइट? Yes, sir. And globalization is associated with also unequal economic and power relationship. Yes. And globalization is also geographically uneven. रुक जाइए, मैं इसको लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखिए, फ्रॉम द अबव, देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऐसे लिखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन it can be concluded that Yes, that globalization is first a shift in the geography, secondly, yes, sir. Yes, sir.
it is associated with unequal economic and power relation, unequal economic and power relation. Yes, sir. Third, its effects is uneven. Its effects are geographically uneven. Uneven. Yes, sir. Right. Fourth लीजिए, the fourth concept of stretching. Yes, sir. Stretching, intensification, Yes, sir. interpenetration, Yes, sir. and infrastructure. And infrastructure are helpful in exploring the impact of globalization. Done? Yes, sir. Okay. तो आज इतना ही रहने देते हैं. Yes, sir. Right. और कल हम ग्रेट डिबेट पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि क्या ग्रेट डिबेट है, राइट, इसके बारे में. और बेसिकली हमें 3 डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन का पढ़ना है. मैं आपको बता दूं, हमें 3 डायमेंशन पढ़ना है. एक डायमेंशन है कल्चरल डायमेंशन इसका, और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ कल्चर एक्सचेंज हुआ इस ग्लोबलाइजेशन के कारण. कल्चरल डायमेंशन. और दूसरा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन, और तीसरा पढ़ेंगे हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन. राइट? यस सर. ये तीनों डायमेंशन पढ़ेंगे. पहले 3 डिबेट पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर के क्या कहना है. कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़िया हो रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन बहुत खराब काम कर रहा है. राइट? ग्लोबलाइजेशन में बदल तो रहा है लेकिन ये बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट जा रहा है. राइट? यस सर. राइट. और कुछ लोग कहते हैं कि कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है पूरा मिथ है, ग्लोबलाइजेशन नाम का चीज ही नहीं है. एक्चुअली ये पहले भी था, अब क्या हुआ, ज्यादा हो गया है. और ये ग्लोबलाइजेशन हल्ला जो कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं. और जो तीसरा है वो कह रहा है कि भैया तुम दोनों जो कह रहे हो वो सही नहीं है, और ये मध्य मार्ग अपनाता है अपनी बात को कहने के लिए. राइट? तो 3 डिबेट के बाद 3 वो पढ़ेंगे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ वर्ल्ड. हैव यू हर्ड ऑफ फोर्थ वर्ल्ड? नो. कल बताऊंगा फोर्थ वर्ल्ड. अमेरिका में भी फोर्थ वर्ल्ड है. इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक अलग सा इंपैक्ट डाला है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट. It has created a divide between rich and poor. Right? So every global center, the city now has become a global power. Delhi, London, California, Tokyo, Beijing, right? Yes sir. So everywhere this is a power center, and at every global city you can find the poor, the apartment dwellers, the shanty towns in Asia. Right? These are the fourth world, the world of poor, the world of marginalized, the world of hunger. So it's not that कि US में नहीं है, US में भी है ये world. Right? You can find everywhere, that poor,
pauper. Have you heard of the word pauper? No. Pauperizing self. अपने आप को गरीब करना, you know, the pauperizing the people. जानबूझकर गरीब बनाना किसी को, right? So globalization has impacted, and globalization has impact differently on different people, right? Okay, sir. Unskilled labor, woman, child, right? The marginalized class and caste has, you know, faced globalization with unfavorable. उनको ये फायदा नहीं पहुंचाया है, and they are being, you know, exploited in this world, right? And they have created their own world that is called fourth world, right? कल बताऊंगा फोर्थ वर्ल्ड क्या है, कौन कहा है, किसने कहा है, राइट? सो इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। आज तो फिर फॉरेन पॉलिसी नहीं हो पाएगा। Yes, sir. So see you tomorrow then. Okay, sir. Bye, sir. Bye bye.